equal to 100 good friends, but one good friend is equal to a library. So children, today's story is depict on friendship. What is the meaning of friendship and how we should choose our friends? That is the story. So here the meaning of this thought is, which is written by APJ Abdul Kalam, one best book is equal to 100 good friends. If you have not 100 friends, then you have one book. You can read it and you can get lots of knowledge, happiness, which 100 good friends can't give. But one good friend is equal to a library. But if you have one good friend who is really loyal with you, who is really believe on you and you believe on that friend, that is equal to a library. You need nobody if you have one good friend. Not many, but one good friend. Okay, now I'm starting. See children, the three dolls. Story name is Three Dolls. It is the story of Akbar Birbal series. See children, now I am starting. The king Mughal Emperor Akbar was famous for his wisdom and encouragement of scholars and artists. मुगल एम्परर अकबर जो थे वो प्रशंसक थे गुणों के. He was famous for his admiration of talented people. टैलेंटेड लोग जो होते थे उनको वो बहुत एडमायर करते थे, उनको अपने दरबार में बुलाते थे, उनको अपने दरबार में रखते थे. उनको बहुत पसंद था जो लोगों में कोई क्वालिटी होती थी, टैलेंटेड होते थे, गाने में, बजाने में, ड्रॉ करने में, एनी टैलेंट ही एडमायर. जो अकबर always admire the person who is scholar and artist. Many came to his court with their fine arts to exhibit in front of the king and be rewarded. So many people from different countries come to exhibit their art to King Akbar, and Akbar give them lots of money and things when he was very happy. But Birbal, you can see there is Birbal. His most intelligent minister was unhappy because there was many people in Akbar court who was pass all the messages to the citizens. तो जो बातें किसी को बतानी नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंशियल बातें, अकबर के कोर्ट में ऐसे बहुत सारे लोग जमा हो गए थे एज ए फ्रेंड ऑफ अकबर, जो दूसरे लोगों को सारी बातें बता दिया करते थे. एंड अकबर फेथ ऑन देम फॉर एनी रीजन. Akbar was so good and believe on others that he was very kind king. So he believed on them. So Birbal thought, now I have to do one plan. I have to do one thing to make my king Akbar that everyone is not your friend. Don't faith on everyone. So उसने एक trick लगाई. He got an idea. One day Birbal brought 3 beautiful dolls to the court, and he came as an artist. He came as an artist, and what he done? He come with 3 beautiful dolls. क्या लेके आए? 3 बहुत ही सुंदर गुड़िया. All the 3 dolls looked alike. सारे जो डॉल थे वो एक जैसे दिख रहे थे. तीनों डॉल बिल्कुल एक जैसे थे, उनमें कुछ भी चेंजेस नहीं था. देयर इज नो चेंजेस इन एनी डॉल. यू कैन सी इन द पिक्चर. नाउ he placed them. Amita Pawar, why you unmuted? Mahi Khan, why you unmuted? Mahi Khan, don't unmute. If you have any doubt, I'm write in chat box. I'm seeing. D, write D. I will unmute you, but don't speak. Unmute mat karo bas. Write D, okay, in chat box. I can see chat box. Okay. He placed them before the king and said, "Your Majesty, please examine them and choose the best, the worst, and the one not so good." So what he said? What he said? King, please, आप इसमें से from
Dhwanit said he placed them before the king and said, Your Majesty, please examine them and choose the best, the worst and not so good. तो उन्होंने क्या किया, तीनों डॉल अपने सामने उनके सामने रख दिए अकबर के सामने और बोला कि जहापना आप इसमें से जो सबसे अच्छा है उसको चूज करो, उसके बाद जो उससे ज्यादा उतना ज्यादा अच्छा नहीं है उसको चूज करो और उसके बाद जो बिल्कुल अच्छा नहीं है उसको चूज करके मुझे बताओ. Now king was amazed to see that all three looked alike. All the dolls are same. There was no outward differences. All exhibit the fine skill and talent of the craftsman. But because Birbal had said to choose the best among the dolls, the king knew that there must be some difference. जब बिरबल ने बोला है कि डिफरेंस ढूंढो तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस जरूर होगा. दैट किंग अकबर अंडरस्टैंड. द किंग इंस्पेक्टेड द डॉल मिनटली. वन बाय वन वो सारे डॉलों को देखा, एक एक मिनट 2-2 मिनट सारे डॉल के लिए दिया और ध्यान से देखा. सडनली ही नोटिस्ड दैट one doll had a hole in both the ears. What is that? Saw कि उसके ईयर में होल है. डॉल के एक डॉल के ईयर में होल है और दूसरे साइड में भी है. दोनों ईयर में कान में होल है. द होल. So he put Akbar what done? He also very intelligent. He put a thin wire through one hole and it come out through the other. तो उन्होंने क्या किया, एक पतला सा वायर, आप पिक्चर में देख सकते हो, ये देखो उन्होंने क्या किया, अकबर ने एक पतला सा वायर डॉल के कान में डाला तो वो वायर जब अंदर भेजा तो दूसरे कान से निकल आया. Now the king found a hole in one of ear of the next doll and a hole in the mouth. अभी वो दूसरे डॉल के पर बढ़ा तो क्या देखा, दूसरी डॉल के कान में तो एक ही कान में छेद था, होल था, एंड माउथ में होल था. तो when he put the wire on the one hole of the ear, it come out from the mouth. वायर कहां से निकला, माउथ से निकला. It come out from the mouth. Now Akbar was a little bit conscious that children, APJ Abdul Kalam means है, he is our former president. कलाम, APJ उनका फुल फॉर्म है, उनके नाम का. अब्दुल बहुत बड़ा नाम है, आई विल गिव यू. उनका शॉर्ट फॉर्म है APJ अब्दुल कलाम. ही इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड न्यूक्लियर मैन, मिसाइल मैन उनको कहा जाता था. ही वाज साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट थे हमारे. ओके नाउ सेकेंड डॉल के वायर, व्हेन यू पुट द वायर इन सेकेंड डॉल्स ईयर, इट कम आउट फ्रॉम द माउथ. नाउ द किंग वाज वेरी क्यूरियस टू नो about the third doll. He then inspected the third doll. The king found a hole in the ear and nowhere else. अभी तीसरी डॉल की तरफ वो जैसे बढ़े तो उसके कान में छेद तो था. When he put the wire into the hole, it went in and remained there. तो एक ही छेद था, तो जैसे उन्होंने वायर तीसरी डॉल के कान में डाला वो कहीं नहीं गया, तो वायर उसके अंदर ही रह गया, कहीं निकला नहीं. The king thought for a while, then said, "You are very clever man, Birbal, but now you done so foolish thing. You make a doll, 3 dolls at equal, and then you make holes in one. You make 2 holes in one. You make in mouth, and you make 1 hole. You are very foolish. Now there is no intelligence to make this." Doll, you wasted my time. Akbar was very angry that you wasted my time. Why are you showing me this type of things? Then Birbal said, "Please let me explain, my Jahapana. There is a message for the people." What message? Akbar asked, what message? Birbal said, "These 3 dolls represent 3 types of friends."
ये जो तीनों डॉल है 3 तरह के दोस्तों का परिचय देता है. एवरी मैन नीड्स अ ट्रू फ्रेंड टू हेल्प हिम इन डिफिकल्टीज. हर किसी को ऐसा ही दोस्त चाहिए जो मुसीबत में उसके काम आए. लिसन टू हिम विथ काइंडनेस एंड कीप हिज सीक्रेट्स. और फ्रेंड्स कैसा होना चाहिए? जो उसकी सारी बातें सुने पर उसको सीक्रेट रखे, उसे किसी को ना बताए. फर्स्ट डॉल, जो पहला डॉल है, स्टैंड फॉर द वर्स्ट काइंड ऑफ फ्रेंड. सबसे खराब डॉल है, बिकॉज ये टेल अबाउट योर ट्रबल्स टू हर, she will pretend to listen but she does not care. वो सुनेगा, वो तो हमारी बात, आपकी बात तो सुनेगा, मगर वो ध्यान ही नहीं देगा. उस एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा. तो ऐसा फ्रेंड किस काम का, जो आपकी बात तो सुने पर आपका दुख दर्द समझे ही नहीं, उसे ध्यान ही ना दे. So first doll was worst. So it will not care you. What she heard pass out without leaving any impression on her mind. She cannot help you anytime. With her, there is no love or trust. Now, second doll. Second doll stand for the second-rate friend. Second rate. Second doll, she may listen to you kindly, but she could not be dangerous because your secrets will soon reach others. That is why the wire went through the ear and came out through the mouth. मतलब वो कुछ भी आप उसको सीक्रेट बताओगे अपना एज ए फ्रेंड, वो सब कुछ सबको जाके बता देगा. तो दिस टाइप ऑफ फ्रेंड इज एट ऑल नॉट गुड. दे आर सेकेंड रेट फ्रेंड्स. फर्स्ट वन इज फर्स्ट डॉल which not even listen. इस कान से सुन के वो उस कान से निकाल देगा. दूसरा डॉल जो मुंह से बता देगा वो भी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके सीक्रेट्स तो वो सबको बता देगा. The third doll represent the best kind of friend. Whatever you tell such a friend, she will listen carefully and kindly. She will try to help you. She will try to help you. Never talk about what you say to others. So this is the best doll. You are safe with such friend. They are both lovable and trustable. Love and trust will be there in this type of friend. The king rewarded Birbal for this his beautiful doll and craftsmanship and his wisdom. He said, "You are true. Now I understand how to make friends and how I will choose friends in the whole thing." So children, what you understand from the story? Human being needs company because they cannot live alone. हम सब को फ्रेंड्स चाहिए, हम अकेले नहीं रह सकते. We as human beings need to make friends. We depend on each other. We often need the help of others and they need our help. A life without friend is not worth living. हम फ्रेंड्स के बिना जिंदगी भी नहीं बिता सकता, वो जिंदगी अच्छी भी नहीं होती है, मजेदार भी नहीं होती है. To share our joys and sorrows, we should make good friends. हमें फ्रेंड्स बनाने चाहिए अपनी खुशियों को बांटने के लिए और अपने गम को भी, प्रॉब्लम्स को भी. But it is very important to choose our friend wisely. Good and true friends are hard to find. We may think that we have many friends, but only a few of them will be sincere and true friends. Friend and friendship must be tested. True and good friends will stand by us in our difficulties and trials. When we find good friends, we must learn to keep them in our heart. Friends can be lost and friendship can be destroyed. We have to be very careful in our words, deeds, and behavior. Even when we are angry, we should not utter careless or angry words against our friends. It is dangerous to listen to others and turn against our friends. Our friend, if we should hesitate to apologize any time, we should be prepared to forgive our friends if they go against us. To have a good friend means being a good friend. So children, अगर हम अपने फ्रेंड से ये सारी चीजें आशा करते हैं कि हमारे फ्रेंड ऐसे हो, तो हमें भी ऐसा बनना होगा ताकि हम भी किसी के अच्छे फ्रेंड बने. तो अगर हम सब ऐसे बन जाएंगे तो हमें हर किसी को अच्छा ही फ्रेंड मिलेगा. Now children, end of the story, you write these
4 words only in your notebook. Now you write these 4 words in your notebook. Then we will start conversation. What you understand from the story. Yes, you have to write.